So, thank you, Sonia, first of all, and thank you everyone for joining. And today we are going to discuss like how we can start business in USA digitally. We do not have to go there and visit USA and to start a business over there. We have this privilege in USA that we can start their business in USA as a non-resident from India or anywhere in the world. So today's session is all about that only. So let me start. First of all, little bit about ourselves, me and Utsav. I'm a YouTuber and a business consultant at TruAnalyst Solutions LLP, an IRS certified CPA agency. And Utsav is a CA and CPA and founder of this TruAnalyst Solutions LLP. So today we'll be guiding you through the process. And if you have any technical questions related to taxation and compliances in the USA, Utsav is going to answer your questions. So I'm starting now. And first of all, the question comes, why should we choose USA? So the answer is the US is like the biggest market, and the consumer over there are having like the ease of doing business, and the consumer mindset is very different. So if we have a market in USA, it is always going to be easy and high profitable because the budgets and all are little bit higher over there. And being from India, if we earn even very less profit, but it is in USD, then it gradually becomes high for us. So these are the few things that we consider while registering in the USA. And the taxation part. The taxation is lower there as compared to in India and any other countries. And we get the global trust as well. If we are registered in USA, we can do business in other countries as well. If a US registered business or company reach out to any client from anywhere in the world, they gain their trust very easily because they are registered in USA. Everybody knows that if a company is registered in USA, it would be a big business. They already have that trust in the US entities. So we get that privilege as well if we are registered in USA. So next, getting started. Like, what are the steps we have to follow to register the business in USA? So before registering your business, whatever business you are having, चाहे वो e-commerce हो या फिर कोई B2B business हो like digital marketing, IT companies or staffing agencies, आप कोई भी business start कर रहे हो, you should first do the proper market research. You should know whatever idea you have, is it a fit in the USA market? Because most of the people do this mistake that उनको लगता है कि अगर उनका प्रोडक्ट उन्होंने बहुत अच्छा बिल्ड किया है या फिर वो बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, they think that के they will get the customers from anywhere, but it is not true. Market research is very important before starting any business, क्योंकि जरूरी नहीं है जो हमारा प्रोडक्ट है वो सभी जगह चले. हो सकता है कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो यूएसए मार्केट में चले ही नहीं और इंडिया में बहुत अच्छा चले, या फिर यूरोपियन मार्केट में चले, या फिर इधर यूएई कंट्रीज में चले, अरेबियन कंट्रीज में. सो वी शुड डू द मार्केट रिसर्च फर्स्ट before taking any steps. And after that, second thing comes the understanding the tax compliances. अभी जब आप यूएस में रजिस्टर कर रहे हो, सो यू आर लीगली रजिस्टर्ड ओवर देयर. सो आपको वहां के लीगल रूल्स सब फॉलो करने पड़ेंगे. आप ये नहीं कर सकते कि सिंपली आपने जैसे कहीं पे साइन अप कर दिया हो ऑनलाइन और फिर आप चाहो तो जब मर्जी छोड़ दो. एक बार आपने रजिस्टर कर दिया है तो आपको सारे लीगल कंप्लायंसेस फॉलो करने पड़ते हैं उस कंट्री के. किसी भी कंट्री में आप रजिस्टर करते हो, यूएसए के लॉज तो थोड़े स्ट्रिक्ट भी है. सो आपको वहां पर उनके जितने भी टैक्स कंप्लायंसेस होते हैं और फेडरल कंप्लायंसेस जितने भी होते हैं सब आपको फॉलो करने पड़ते हैं. मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको ब्रीफ दे देता हूँ कैसे रहता है. यूएसए में 50 स्टेट्स हैं, 50 प्लस स्टेट्स हैं. सारे स्टेट्स के अपने अपने अलग अलग कंप्लायंसेस एंड लॉज रहते हैं और फेडरल वहां पे सेपरेट रहता है. फेडरल मींस दी सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी होती है वो. तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने लॉज हैं, स्टेट के अपने अलग अलग लॉज हैं. अब जिस भी स्टेट में आप रजिस्टर करते हो तो आपको उस स्टेट के कंप्लायंसेस भी फॉलो करने पड़ते हैं, एज वेल एज आपको फेडरल कंप्लायंसेस भी सारे फॉलो करने पड़ते हैं. तो स्टेट में आपकी कंपनी रिन्यू वगैरह करनी पड़ती है आपको, और जो स्टेट के टैक्सेस वगैरह पे करने होते हैं वो करना होता है.
बाकी फेडरल में आपको इनकम टैक्स फाइलिंग करनी होती है एनुअल बेसिस पे। सो दीज आर द टू टाइप ऑफ कंप्लायंसेस जो वहां पे बेसिकली होते हैं। अब जब हम स्टेट की बात कर रहे हैं तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि लाइक स्टेट कौन सा चूज करें, क्योंकि इतने सारे स्टेट्स हैं। विच स्टेट सूट्स यू दी विल सूट योर बिजनेस, ठीक है। तो इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें कंसीडर करने चाहिए बिफोर चूजिंग अ स्टेट। अब क्या होता है कि कुछ फेमस स्टेट्स हैं ये, जैसे डेलावेयर, वायोमिंग, टेक्सास वगैरह। सो आपको सबसे पहले स्टेट के टैक्सेस देखने चाहिए कि स्टेट में इनकम टैक्स कितना है। अगर अगर आप वहां पर बिजनेस कर रहे हो तो आपको कितना टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। हर स्टेट में अलग अलग है। बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो टैक्स फ्री स्टेट्स हैं। अगर आपने वहां रजिस्टर किया है तो स्टेट गवर्नमेंट को आपको कोई इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 3 एग्जाम्पल जो है, डेलावेयर, वायोमिंग, टेक्सास, यहाँ पर आपके स्टेट इनकम टैक्स 0 है। बट एक और टैक्स होता है स्टेट में, फ्रेंचाइजी टैक्स। व्हेन यू आर रजिस्टर्ड इन अ स्टेट तो आपको रिन्यू करने के लिए हर साल एक छोटा सा फिक्स्ड अमाउंट पे करना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट को। अब जैसे डेलावेयर का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, तो डेलावेयर में $225 मिनिमम फ्रेंचाइज टैक्स है जो आपको हर साल देना पड़ेगा अपनी कंपनी रिन्यू करने के लिए। वही चीज वायोमिंग में सिर्फ $62 है और टेक्सास में 0 है। सो इतना डिफरेंस आ जाता है एक डिफरेंट स्टेट चूज करने से। डेलावेयर में आपको पे करना पड़ेगा $225 और टेक्सास में आपको पे करना पड़ेगा 0। कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा टू रिन्यू योर कंपनी। सो ये भी एक मेजर चीज होती है, क्योंकि रेकरिंग कॉस्ट है, ये आपको हर साल पे करना पड़ेगा, इसलिए आपको ये चीज कंसिडर करनी चाहिए इनिशियली स्टेट चूज करने से पहले। उसके अलावा कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन भी आती है। हर स्टेट की अलग अलग कॉस्ट रहती है, क्योंकि हर स्टेट की अपनी अपनी फीस है। वहां पे हमें एक रजिस्टर्ड एजेंट हायर करना होता है, वर्चुअल बिजनेस एड्रेस भी लेना होता है उस स्टेट में। सो सारी कॉस्ट मिला के टोटल कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन बनता है। अभी टोटल कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन हर स्टेट का अलग होता है, बिकॉज हर स्टेट की रजिस्ट्रेशन फीस एंड कॉस्ट अलग होती है। यहाँ भी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे सकता हूँ। जैसे डेलावेयर में फॉर्मेशन कॉस्ट अराउंड 400 टू $500 आती है। टेक्सास में अराउंड 700 टू $750 आती है। सो इतना डिफरेंस ये भी आ जाता है। अब डेलावेयर में फॉर्मेशन कॉस्ट तो कम आ रही है, बट रेकरिंग कॉस्ट $225 आपको हर साल देनी पड़ रही है। टेक्सास में आपकी फॉर्मेशन कॉस्ट थोड़ी हाई आ रही है, बट हर साल रिन्यूअल कॉस्ट आपकी 0 हो जा रही है। सो ये सारा आपको अभी के हिसाब से देखना पड़ता है, अपने हिसाब से, आपके बिजनेस के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से क्या मोस्ट सूटेबल है। आप इनिशियली थोड़ा ज्यादा इन्वेस्ट करके आगे तक का ईज लेना चाहते हो, आगे तक आपको रेकरिंग कॉस्ट 0 देनी पड़े, या फिर आप इनिशियली कम इन्वेस्ट करके आगे रेकरिंग कॉस्ट लेने के लिए ओके हो। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। जो हम जब भी आप हमारे थ्रू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो हम पहले ये चीज डिस्कस करते हैं और अच्छे से समझते हैं, उसके बाद आपका डिसीजन लेने में भी हेल्प करते हैं। सो दैट इज हाउ वी चूज अ स्टेट। और हाँ, अगर अलग अलग टाइप के बिजनेसेस के लिए भी अलग अलग स्टेट सूटेबल होते हैं। जैसे आईटी कंपनीज की अगर बात करें तो फॉर्चून 500 में से 300 कंपनीज डेलावेयर में ही रजिस्टर्ड है, क्योंकि डेलावेयर हैज मोस्ट सूटेबल लॉज फॉर आईटी फर्म्स। सो क्या होता है कि अगर आप आज कोई कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं और कल को आप उसमें इन्वेस्टमेंट रेज करना चाहेंगे, कोई भी बिजनेस स्टार्टअप है अगर आपका, तो अगर फ्यूचर में आप इन्वेस्टमेंट रेज करना चाहेंगे तो इन्वेस्टर्स प्रेफर करते हैं डेलावेयर। सो इवन दो वहां पे रेकरिंग कॉस्ट थोड़ी हाई है, स्टिल आपको डेलावेयर में रजिस्टर करना पड़ सकता है, क्योंकि आपके गोल्स वैसे हैं, क्योंकि आपको फंड रेज करना है और इन्वेस्टर्स प्रेफर करते हैं डेलावेयर। सो वी विल हैव टू चूज डेलावेयर एनीवे। बट अगर आपका ई कॉमर्स बिजनेस है जहां पर आप कहाँ रजिस्टर्ड हो इससे फर्क ही नहीं पड़ता, आपके कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स को पता भी नहीं चलेगा आप कहाँ एक्चुअली रजिस्टर्ड हो। बस वो आपकी वेबसाइट पे जाके आपके प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हैं या फिर अमेजोन के थ्रू कर सकते हैं। सो उस केस में आप कहीं भी रजिस्टर कर सकते हो, वायोमिंग, न्यू मैक्सिको, कोई भी सस्ता सा स्टेट देख के जहाँ पर सस्ते में रजिस्ट्रेशन हो जाए और रेकरिंग कॉस्ट भी नॉमिनल हो, तो ऐसे स्टेट में आप रजिस्टर कर सकते हो। बट अगर आप स्टाफिंग एजेंसी या फिर कोई भी आईटी कंपनी, बट देयर इज नो गोल ऑफ रेजिंग फंड्स इन फ्यूचर, तो इस टाइप का अगर आपका कोई भी बिजनेस है, कोई भी बी टू बी बिजनेस है जहाँ पे आप क्लाइंट्स के साथ डील करोगे और उनको पता चलेगा कि आप कहाँ रजिस्टर्ड हो, उस केस में आपको एक हाई रेपुटेशन वाले स्टेट में रजिस्टर करना पड़ता है। आप छोटे मोटे किसी स्टेट में रजिस्टर नहीं कर सकते, आपको एक वेल नोन स्टेट में रजिस्टर करना पड़ता है।
उस केस में टेक्सास हो गया, फ्लोरिडा हो गया, इस टाइप के स्टेट्स को हम प्रेफर करते हैं क्योंकि वो नामी स्टेट्स हैं, लोग फ्लोरिडा एंड टेक्सास को अच्छे से जानते हैं। तो वहां अगर आप रजिस्टर्ड रहोगे तो आपके बिजनेस रेपुटेशन भी अच्छी बनेगी। अगर आप वायोमिंग में रजिस्टर्ड रहोगे तो उनको पता रहेगा कि आप एक नॉन रेसिडेंट बिजनेस हो, यूएस के नहीं हो आप। तो उस केस में फिर वायोमिंग हम रिकमेंड नहीं करेंगे, हम टेक्सास या फ्लोरिडा रिकमेंड करेंगे, और वहां पर आपका रेकरिंग कॉस्ट भी काफी कम हो जाती है। तो दैट इज हाउ वी डिसाइड द स्टेट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एंड बड़ी चीज है, चूजिंग अ स्टेट। सो इस पे आपको बहुत अच्छे से टाइम देके और अच्छा रिसर्च करके, डिस्कशंस करके प्रोफेशनल्स के साथ फिर ही चूज करना चाहिए, क्योंकि एक बार रजिस्टर कर दिया फिर लाइफ लॉन्ग आपको उस स्टेट के सारे रूल्स, कंप्लायंसेस और जो भी इम्पैक्ट है उस स्टेट का वो आपको झेलना पड़ेगा आने वाले टाइम में। सो दैट इज हाउ वी प्रोसीड विद स्टेट, चूजिंग अ स्टेट। अभी आता है चूजिंग द राइट बिजनेस स्ट्रक्चर। स्टेट आपने चूज कर लिया, सबसे पहले आपने मार्केट चेक कर लिया अपना कि हाँ आप सूटेबल हो उस मार्केट के लिए। दूसरा आपने स्टेट चूज कर लिया। तीसरा अब ये आता है स्टेप चूजिंग द राइट बिजनेस स्ट्रक्चर। अभी एज अ नॉन रेसिडेंट आप एलएलसी या फिर सी कॉर्प, इन दोनों में से ही कोई एक स्ट्रक्चर चूज कर सकते हो। स्ट्रक्चर्स तो और भी होते हैं जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, एस कॉर्प वगैरह, बट एलएलसी और सी कॉर्प ही आप कर सकते हो एज अ नॉन रेसिडेंट। अब एलएलसी क्या होता है? एलएलसी होती है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। तो इट इज सिमिलर टू काइंड ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप ओनली बट विद लिमिटेड लाइबिलिटी। तो बिजनेस में अगर कुछ लाइबिलिटी आती है तो उसके ओनर्स को उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करती है, कुछ प्रोटेक्शन मिलता है आपको, बिजनेस तक ही रहते हैं। अगर लॉ सूट वगैरह अगर फाइल हो जाता है तो वो बिजनेस तक रहता है, आपके पर्सनल एसेट्स पे नहीं आता है। सो दैट इज व्हाट एलएलसी इज। और थोड़ी सिंपल है ये एज कम्पेयर टू सी कॉर्प। इसका स्ट्रक्चर काफी सिंपल होता है, पास थ्रू एंटिटी कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें अगर कोई प्रॉफिट या लॉस कुछ भी होता है वो डायरेक्ट ओनर का ही माना जाता है, कंपनी का इसमें कुछ रोल नहीं होता। जो भी कंपनी का प्रॉफिट होगा वो ओनर अपने इंडिविजुअल रिटर्न में फाइल कर सकता है, एलएलसी के लिए उसको सेपरेट रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हाँ, ये मीडियम और स्मॉल साइज के बिजनेसेस के लिए मोस्ट सूटेबल होती है। अगर आपको बड़ा बिजनेस बिल्ड करना है, लाइक बड़ी आईटी कंपनी खोलनी है जिसमें आप 50-100 एम्प्लॉयज रखोगे, या फिर कोई भी ऐसा बिजनेस जिसमें 50-100 एम्प्लॉयज रहने वाले हैं आपके मिनिमम, और नंबर ऑफ डायरेक्टर्स भी ज्यादा रहने वाले हैं, या फिर पार्टनर्स ज्यादा रहने वाले हैं, 4-5 पार्टनर्स होने वाले हैं, तो उस केस में सी कॉर्प चूज करते हैं, क्योंकि सी कॉर्प इज अ वेल स्ट्रक्चर्ड बिजनेस। जैसे प्राइवेट लिमिटेड होती है इंडिया में, ऐसे सी कॉर्प होती है यूएसए में। यहाँ पर जो ओनर्स होते हैं वो डायरेक्टर्स होते हैं, और नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से ओनरशिप डिसाइड होती है। एलएलसी में परसेंटेज के हिसाब से ओनरशिप डिसाइड होती है। सी कॉर्प के केस में आप कंपनी का टैक्स रिटर्न फाइल करते हो सेपरेटली, और कंपनी बिल्कुल सेपरेट एंटिटी मानी जाती है, और जो उसके डायरेक्टर्स होते हैं बिल्कुल सेपरेट होते हैं कंपनी से। कोई भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो वो कंपनी का ही माना जाएगा, डायरेक्टर्स का कोई लेना देना नहीं है। डायरेक्टर्स अपनी सैलरी या फिर प्रॉफिट, अपनी इक्विटी के अगेंस्ट प्रॉफिट विड्रॉ करते हैं। सो उसके हिसाब से जो भी वो अपना प्रॉफिट विड्रॉ कर रहे हैं, सैलरी विड्रॉ कर रहे हैं, वो उनके पर्सनल इनकम में एड ऑन होता है, उसके हिसाब से वो अपना पर्सनल रिटर्न अलग फाइल करते हैं। सी कॉर्प एज अ कंपनी अपना रिटर्न अलग फाइल करती है, जबकि एलएलसी में एज अ कंपनी आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सी कॉर्प के केस में अगर आपको आपको दो रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे, एक सी कॉर्प का अपना अलग जाएगा, अपना पर्सनल जो भी आपकी होम कंट्री में होता है वो तो आप करोगे ही करोगे, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एलएलसी एंड सी कॉर्प। अब ये चूज करना भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है, आप अकेले तो चूज नहीं कर पाओगे, इसके लिए भी आपको किसी प्रोफेशनल के साथ डिस्कस करना ही पड़ता है, अपने बिजनेस गोल्स बताने पड़ते हैं, और उसके हिसाब से आप कर सकते हो। आपको रिसर्च करना पड़ता है थोड़ा सा इसके बारे में, और डिटेल में जानना पड़ता है कि क्या क्या कंप्लायंसेस फॉलो करने पड़ेंगे सी कॉर्प और एलएलसी के केस में, देन यू कैन डिसाइड इजीली। बट हाँ, अगर आप स्टार्टअप हो, छोटा बिजनेस है, तो सिंपली आप एलएलसी चूज करके बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। लेटर ऑन आप सी कॉर्प में कन्वर्ट भी कर सकते हो, अगर आपका बिजनेस ग्रो होता है करता है तो आप सी कॉर्प में कन्वर्ट भी कर सकते हो। अब आता है थर्ड स्टेप, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। पहले तीन स्टेप्स आपके जब क्लियर हो जाते हैं देन यू कम टू दिस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। यहाँ पे क्या होता है प्रोसेस में, जब आप स्टेट चूज करते हो तो उस स्टेट के अंदर आपको एक रजिस्टर्ड एजेंट चाहिए, जो आपके बिहाफ पे कोई भी अगर गवर्नमेंट नोटिस आता है या कुछ भी आता है वो रिसीव करेगा और आपको ईमेल करेगा स्कैन करके।
सो रजिस्टर्ड एजेंट हायर करना कंपलसरी होता है हर स्टेट में। अगर आप नॉन रेसिडेंट हो, आप तो रहते नहीं हो उस स्टेट में, आप तो इंडिया में या वर्ल्ड में कहीं भी रहते हो, गवर्नमेंट आपको कहाँ ढूंढेगी। इसलिए उन्होंने ये चीज मैंडेटरी की है कि आप रजिस्टर्ड एजेंट हायर करो जो आपके बिहाफ पे आपका डॉक्यूमेंट रिसीव कर सके। अगर कोई भी कोर्ट से नोटिस आता है इवन इन इंडिया, जब तक उस नोटिस पे रिसीव नोटिस के रिसीट पे आपने साइन नहीं कर दिया कि हाँ आपको रिसीव हो गया है, तब तक वो माना नहीं जाएगा कि आपको नोटिस रिसीव हुआ था। सिमिलरली यूएस में अगर कोई नोटिस कुछ भी आ रहा है तो आप तो साइन कर नहीं पाओगे क्योंकि आप हो नहीं। तो रजिस्टर्ड एजेंट को अगर वो डिलीवर हो जाएगा तो वो मान लिया जाएगा कि हाँ आप तक पहुंच गया वो नोटिस। अब रजिस्टर्ड एजेंट ट्रस्टवर्दी होना चाहिए जो आपको वो नोटिस डिलीवर कर ही दे। अगर अगर वो नोटिस डिलीवर नहीं किया तो गवर्नमेंट इस चीज को नहीं मानेगी कि आपको नोटिस नहीं मिला है। वो इसको मानेंगे कि उन्होंने तो नोटिस भेजा था, आपके एजेंट ने रिसीव किया था, आप तक नहीं पहुंचा, इसमें गवर्नमेंट की गलती नहीं है, ये आपके एजेंट की गलती है, आप ही ने एजेंट हायर किया है, आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रजिस्टर्ड एजेंट हायर करते हैं। उसके बाद फिर आर्टिकल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें फाइल करना होता है स्टेट डिपार्टमेंट में। एक बार फाइल कर देते हैं तो वहां से हमें फॉर्मेशन सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन डन होने के बाद फॉर्मेशन सर्टिफिकेट हमें वहां से मिल जाता है स्टेट डिपार्टमेंट से। दैट मीन्स स्टेट लेवल पे हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया। उसके बाद हम EIN, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑब्टेन करते हैं IRS डिपार्टमेंट से। अब IRS क्या है? इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज। वहां का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, जैसे इंडिया में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ऐसे वहां पे IRS है। irs.gov गवर्नमेंट वेबसाइट है। तो IRS का एक प्रोसीजर रहता है, उसको फॉलो करके हम EIN ऑब्टेन करते हैं अगेंस्ट आवर बिजनेस। तो एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर टैक्स आईडी होती है आपकी बिजनेस की, चाहे आपने LLC रजिस्टर की है चाहे C कॉर्प की है, दोनों के लिए EIN जनरेट करना जरूरी होता है। उसके बाद जब आपको EIN मिल जाता है, आपका रजिस्ट्रेशन फेडरल लेवल पे भी हो गया है। स्टेट लेवल पे आर्टिकल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फाइल करके किया था हमने, फेडरल लेवल पे EIN करके किया था। अब इसके बाद हमें कुछ और पेपर वर्क की जरूरत पड़ती है, जैसे W9 हो गया, ऑपरेटिंग एग्रीमेंट हो गया, एक्सेट्रा। सो ये सब डॉक्यूमेंटेशन भी हम आपको प्रिपेयर करके दे देते हैं। ये आपके बिजनेस करने में आपको जरूरत पड़ती है इन सारे डॉक्यूमेंट्स की। तो आपको फॉर्मेशन सर्टिफिकेट, रजिस्टर्ड एजेंट, वर्चुअल बिजनेस एड्रेस, EIN, W9, ऑपरेटिंग एग्रीमेंट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं हमारे साइड से। इसके अलावा टैक्सेशन भी आपको समझना बहुत जरूरी है। तो आप जिस भी प्रोफेशनल को हायर करेंगे, मेक श्योर कि आप उनसे वहाँ के टैक्सेशन एंड कंप्लायंसेस भी समझ लें, तभी आप अपना रजिस्ट्रेशन डन माने। जब आपको ये सारी चीजें पता होंगी तभी आप आगे कंप्लायंसेस को फॉलो कर पाओगे, अदरवाइज आपको पता ही नहीं रहेगा तो आपको हो सकता है आप मिस कर दो कोई कंप्लायंस। एंड गवर्नमेंट का ये रूल होता है कि आप कल को ये नहीं बोल सकते कि हमें पता नहीं था। अगर आपने कोई भी कंप्लायंस मिस किया है, आपको फिर उसके अगेंस्ट जो भी पेनल्टी या कुछ भी आती है वो आपको करनी पड़ेगी। आप ये कह के नहीं छूट सकते कि लाइक हमें तो पता ही नहीं था। इसीलिए प्रोफेशनल्स हैं, उनको हायर कीजिए, उनसे समझिए। और इवन अगर आप कोई CPA परमानेंटली रखेंगे, सो टच में रहेंगे तो आपको वो गाइड रिमाइंड भी करते रहेंगे और गाइड भी कर देंगे कौन से कंप्लायंसेस आपको फिल करने हैं। जैसे आप अगर हमारे थ्रू कराते हैं तो हम टाइमली कंप्लायंसेस एंड ऑल सब रिमाइंड करते हैं अपने क्लाइंट्स को कि आपका ये कंप्लायंस आ रहा है, लास्ट डेट ये है, सो गेट इट डन एज सुन एज पॉसिबल। सो ये सारा होता है प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एक बार हो गया, फिर रजिस्ट्रेशन के बाद आता है ओपनिंग अ वर्चुअल बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे वर्चुअल क्यों? क्योंकि हम एज अ नॉन रेसिडेंट रजिस्टर कर रहे हैं USA में, तो हम फिजिकल बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। कोई भी जो वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट है बैंक्स, बैंक ऑफ अमेरिका, JP मॉर्गन चेज, ये सब में हम अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि इन सब में अकाउंट ओपन करने के लिए हमें विजिट करना पड़ता है ब्रांच। जैसे इंडिया में अगर आपको अकाउंट ओपन करना है बैंक में तो आपको बैंक विजिट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब होगा, तभी आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। सिमिलरली वहां पर है। तो अब तो हम US तो जा नहीं सकते, तो क्या करें, हम वर्चुअल बैंक अकाउंट ओपन करेंगे। अब ये वर्चुअल बैंक अकाउंट्स जो हैं, क्या ये सेफ हैं? क्योंकि ये तो ऑनलाइन है और पैसा आप ऐसे ऑनलाइन छोड़ दोगे अपना, क्या ये सेफ है? जी बिल्कुल सेफ है, क्योंकि ये सब ज्यादातर, ये आपको देखना पड़ेगा जो प्लेटफॉर्म आप चूज कर रहे हो वो FDIC इंश्योर्ड होना चाहिए। दैट मीन्स वो इंश्योर्ड रहेगा आपका पैसा उसमें। अगर कुछ भी होता है बैंक के साथ, कोई साइबर अटैक या कुछ भी, इन दैट केस आपका पैसा इंश्योर्ड रहता है और आपको वो पैसा फिर इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, बैंक दिलवाएगा आपको बेसिकली। सो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है।
बैंक बिल्कुल सेफ हैं ये वाले। और कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे मर्करी है, लिली है, रिले है, वाइज है। ये सारे एफडीआईसी इंश्योर्ड अकाउंट्स हैं, इनमें आप बेझिझक अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यू कैन रन योर बिजनेस स्मूथली। इवन 95% बिजनेसेस इंडिया से ऐसे ही चल रहे हैं यूएसए में, जो वर्चुअली चल रहे हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो यूएसए विजिट करते हैं एंड फिजिकल बैंक अकाउंट ओपन करते हैं। यूएस का वीजा ही मिलना बहुत मुश्किल होता है पहले तो हर कोई इतना इजीली नहीं जा सकता, बट बिजनेस सबको करना है तो वर्चुअल बैंक अकाउंट्स आर अ ग्रेट ऑप्शन फॉर दैट। अब बैंक अकाउंट ओपन होने के बाद आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन एंड सारा प्रोसेस डन ही हो गया है। यू आर गुड टू गो, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। यू जस्ट नीड क्लाइंट्स नाउ जो आपको पैसा दें, और जिस जो ये आपने वर्चुअल अकाउंट खोला है इसमें आपका पैसा आ जाए, राइट। बट अब रजिस्ट्रेशन से पहले कुछ मिस्टेक्स हैं जो आपको कंसिडर करनी चाहिए, सो दैट आप ये मिस्टेक्स ना कर दो। और ये मिस्टेक्स ऐसी हैं जो हमने अपने पास्ट ईयर्स के करियर में देखा है, जो लोगों ने जनरली की हैं, और फिर बाद में हमारे पास जब वो आए हैं तो हमने उनकी हेल्प की है इन गलतियों को सुधारने में। सो सबसे पहले तो नॉट हायरिंग अ प्रोफेशनल सीपीए और टैक्स अटर्नी। बहुत सारे यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, जो आपको बता देंगे कि कैसे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, क्या क्या कर सकते हो। तो फिर लोगों को लगने लगता है ये तो इतना इजी प्रोसेस है, वी कैन सिंपली जस्ट साइन अप। बट इट इज नॉट दैट सिंपल। आप किसी फेसबुक पे जैसे अकाउंट बनाते हैं, ऐसे जाके कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे अकाउंट नहीं बना रहे हो, साइन अप नहीं कर रहे हो। यू आर रजिस्टरिंग अ बिजनेस लीगली इन अ कंट्री। तो आपको हर एक स्टेप बहुत अच्छे से करना होता है। अगर आपने कोई भी छोटी सी एक चीज भी आपने गलत सेलेक्ट की है, तो फिर वो आपको आगे तक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। आपका टैक्सेशन पूरा चेंज हो सकता है लाइक फ्यूचर में आपको उसकी वजह से हाई पेनल्टी पे करनी पड़े। क्योंकि क्या होता है, स्टार्टिंग में कुछ नहीं होता। वंस यू स्टार्ट योर बिजनेस, आप करते रहो 2-4 साल बाद जब थोड़े पैसे आप अर्न करने लगोगे, तब आप नोटिस में आओगे एजेंट्स के, आईआरएस के जो एजेंट्स होते हैं। और हो सकता है वो तब आपको कुछ मतलब कुछ गलती उनको दिखे और फिर वो आपको नोटिस भेजे। एंड 2-3 साल बीत चुके होंगे तो पेनल्टी भी अच्छी खासी बड़ी हो चुकी होगी। जैसे मैंने पहले भी बताया, आप ये रीजन नहीं दे सकते हमें पता नहीं था उस टाइम पर। क्योंकि प्रोफेशनल्स हैं आगे, आईआरएस क्यों सर्टिफिकेशन दे रहा है सीपीएस को, और ये सब क्यों मतलब बना रहे हैं वो प्रोफेशनल, इसीलिए बना रहे हैं बिकॉज दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आप एक प्रोफेशनल से ही करवाओ ये काम, या फिर खुद प्रोफेशनली करो। अगर आप आपको लगता है कि हम प्रोफेशनली कर सकते हैं ये काम को बिल्कुल बिना किसी मिस्टेक के, तो कीजिए। बट अगर आपको ज़रा भी डाउट है कि आपको लग रहा है कि मतलब जस्ट यूट्यूब ट्यूटोरियल देख के मत कर लीजिए। जब तक आपको नॉलेज नहीं है तब तक मत कीजिए। किसी नॉलेजेबल पर्सन को हायर कीजिए। देयर इज अ रीजन कि वो नॉलेजेबल पर्सन प्रेजेंट है मार्केट में, दैट इज देयर इज अ रीजन, सो यू शुड कंसिडर दैट। कि वो कोई ऐसे एग्जाम देकर, इतना टफ एग्जाम देकर सीपीए बनाए या सीए बनाए, वो कोई ऐसे ही नहीं बनाए, क्योंकि उसने नॉलेज ली है उस फील्ड में इसीलिए बनाए। सो यू शुड कंसिडर दैट। सो किसी प्रोफेशनल को ही हायर कीजिए हमेशा। आफ्टर दैट, प्रोवाइडिंग इन करेक्ट और इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन। बहुत सारे लोग अपने पासपोर्ट की इंफॉर्मेशन मैच नहीं करते हैं। आज ही का एक केस है। आई वॉज हेल्पिंग समवन ओपनिंग अ बैंक अकाउंट इन यूएसए। उन्होंने उनके पासपोर्ट में गिवन नेम लिखा था, बट सरनेम नहीं लिखा था। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका सरनेम नहीं लिखा होता, गिवन नेम में ही पूरा नेम लिखा होता है, एक्स वाई जेड जो भी। ठीक है। तो बैंक अकाउंट एप्लीकेशन में उन्होंने क्या किया कि अपने फर्स्ट नेम और सरनेम दोनों लिख दिया, जबकि पासपोर्ट में सरनेम था ही नहीं। अब ये तो मिस इन्फॉर्मेशन हो गया, बैंक अकाउंट रिजेक्ट हो गया उनका। फिर मैंने उनके डॉक्यूमेंट्स रिव्यू किए अच्छे से, तब पता चला कि उन्होंने लास्ट नेम लिखा हुआ था। सो ये सब चीजें अननोइंगली होती हैं, ऑफ कोर्स उन्होंने जानबूझ के तो नहीं किया ऐसा, बट ये मिस्टेक होती है। सो आपको ये चीज देखनी चाहिए पहले कि आपके डॉक्यूमेंट्स में क्या इन्फॉर्मेशन लिखी है। आपको क्या पता है वो मैटर नहीं करता। आपको पता है मेरे को जैसे पता है मेरा नाम अंकित चंदेल है, फर्स्ट नेम अंकित है, लास्ट नेम चंदेल है, ये मैटर ही नहीं करता। मेरे डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है, मेरे पासपोर्ट में क्या लिखा है। अंकित चंदेल अगर गिवन नेम में पूरा लिखा है और सरनेम ब्लैंक है, तो आई हैव टू लीव ब्लैंक एवरीवेयर। जहां पे भी लास्ट नेम पूछा जाएगा मुझे वो ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पासपोर्ट में अंकित चंदेल गिवन नेम में ही लिखा है पूरा। सो ये बस एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो डॉक्यूमेंटेशन से मैच नहीं होती है, फिर वो दिक्कत होती है।
बाद में। सो दैट इज वाई वी मेक श्योर कि हम सारे डॉक्यूमेंटेशन पहले चेक करते हैं बिजनेस रजिस्ट्रेशन से पहले। अब थर्ड पॉइंट है इग्नोरिंग कंप्लायंसेस विद लोकल रेगुलेशंस। तो अभी क्या करते हैं लोग कि जैसे बस रजिस्ट्रेशन कर दिया, यूट्यूब से ट्यूटोरियल वगैरह देख के या किसी से करा लिया, उसके बाद वो कंप्लायंसेस को एकदम लाइटली लेते हैं। उनको लगता है कि अभी रजिस्ट्रेशन तो किया है हमने, कोई बिजनेस तो हमारा हुआ नहीं है, तो हमको कोई कंप्लायंसेस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है। एक बार आपने रजिस्टर कर लिया तो चाहे आपका बिजनेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको कंप्लायंसेस तो फॉलो करने पड़ेंगे। कंपनी रिन्यू करनी पड़ेगी और रेगुलर टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, चाहे उसमें टैक्स बनेगा नहीं आपका, कुछ जीरो दिखा के फाइल कर दो, लेकिन फाइल करना पड़ेगा। अदरवाइज गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि आपका बिजनेस नहीं हो रहा है। सो यू हैव टू फॉलो द कंप्लायंसेस, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये इग्नोर नहीं करना है बिल्कुल भी, इसको बहुत सीरियसली लेना है, क्योंकि मेंटेनिंग द कंप्लायंसेस इज चीपर देन फाइलिंग द पेनल्टीज। क्योंकि छोटी सी पेनल्टी भी अगर लगेगी, $100 की लग जाएगी, इंडियन रुपीज में वो 8-9 हज़ार रुपए हो जाते हैं आजकल, आज की डेट में। सो 8-9 हज़ार रुपए जैसे आप एक पेनल्टी पे करोगे, इससे अच्छा तो कंप्लायंसेस फुलफिल कर लोगे, तो वो ज्यादा सस्ता पड़ेगा आपको। और ये 8-9 हज़ार की पेनल्टी ना, जब तक आपको कंप्लायंस मिसिंग कंप्लायंसेस का पता चलता है, 1-2 साल बीत चुके होते हैं, ये $100 की पेनल्टी पहुंच जाती है 500-600 डॉलर की। और बहुत सारे केसेस में पेनल्टी ज्यादा की भी लग सकती है। तो इसलिए कंप्लायंसेस को बहुत सीरियसली लेना होता है। दूसरा, पुअर फाइनेंशियल रिकॉर्ड कीपिंग। हाँ, अभी रिसेंटली, अब तो खैर काफी टाइम हो गया, अगस्त में हमारे एक क्लाइंट के पास लीगल नोटिस आया था फ्रॉम स्टेट डिपार्टमेंट। उन्होंने, लीगल नोटिस नहीं था, रेगुलर ऑडिट नोटिस था। उसमें क्या था, गवर्नमेंट ने सिंपली ये बोला था कि आप 2021 से आज तक के आपने जितने भी ट्रांजेक्शन किए, जितना भी बिजनेस किया है, उसके डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कर दो हमारे सामने, दैट्स इट। उनको कुछ सस्पिशियस नहीं लग रहा था, कुछ नहीं लग रहा था, उस नोटिस में भी लिखा था इट्स जस्ट अ रेगुलर ऑडिट नोटिस। तो वो सिर्फ चेक कर रहे थे रैंडमली, वो ऐसे कुछ बिजनेसेस को पिक करते हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, कि इन्होंने पिछले 5 साल में अपने कंप्लायंसेस फुलफिल किए हैं या नहीं किए हैं। अब कंप्लायंसेस की बात नहीं है, सिर्फ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स भी होने चाहिए। जैसे आपकी पेमेंट जितनी आ रही है, जितनी जा रही है, उन सबका रिकॉर्ड होना चाहिए आपके पास, कि पेमेंट अगर मेरे अकाउंट में $1000 आए हैं तो ये किस चीज के आए थे, और फिर इस 1000 में से मैंने 800 अगर आगे किसी को पे किए हैं, किस चीज के पे किए हैं। तो इसका जो इनवॉइस होगा वो मेरे पास सेव होना चाहिए, कि $800 मैंने इस इनवॉइस के अगेंस्ट पे किए थे और ये $1000 इस इनवॉइस के अगेंस्ट आए थे। मैंने क्या सर्विस या प्रोडक्ट सेल किया था जिसके लिए $1000 मिले थे, फिर आगे मैंने की कॉस्टिंग $800 की जो भी थी, वो किसके अगेंस्ट लोग किसको पे की थी, इनवॉइसेस, रिकॉर्ड्स, शीट्स सब मेंटेन करके रखिए, सब में मेंशन करके रखिए सब डिटेल्स। मंथ ऑन मंथ अगर आप करते चलोगे तो आपको बिल्कुल हेक्टिक नहीं लगेगा ये। अगर बहुत बड़ा बिजनेस है आपका, बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन है, तो वीकली करके रखिए। अगर थोड़ा कम है तो मंथली करके रखिए। बट रहेगा आपके पास रिकॉर्ड अगर, तो 5 साल या 10 साल का भी मांग लेंगे, अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय मांग लेगा आपसे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो आपको वो प्रोड्यूस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत इजीली आप प्रोड्यूस कर पाओगे। बट अगर आपके पास रिकॉर्ड होगा ही नहीं, अब उनसे जैसे 2021 से लेके 24 तक का पूरा मांग लिया था, अगर उनके पास रिकॉर्ड नहीं होता तो वो 2021 के रिकॉर्ड्स कहाँ से निकालते 2024 में, 3 साल पुराने रिकॉर्ड्स। हमारे पास तो उनके सारे रिकॉर्ड्स थे, क्योंकि वो शुरू से हमारे साथ ही है। सो हमने तो उनको दे दिया, और विद इन 2 वीक्स करना था सबमिट, 2 वीक्स का टाइम दिया था बस। तो विद इन 2 वीक्स अगर किसी के पास रिकॉर्ड्स नहीं है, वो कर नहीं पाएगा। एंड देन फिर दुनिया भर का पेनल्टीज एंड ऑल ये सब झेलना पड़ेगा। और यूएस में तो एक बार अगर कोई लीगल एक्शन हो जाए तो फिर उसको झेलना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि फिर अटर्नी वगैरह आपको हायर करना पड़ेगा, एंड इट विल कॉस्ट यू अ लॉट। सो स्टार्टिंग से ही आप सारी चीजें अपनी अच्छे से करके चलो, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड या, मैं डरा नहीं रहा हूँ ये सब चीजों से, आप डरिएगा मत आप लोग। इट इज जस्ट दैट कि आप अगर सारी चीजें सही से करके चलेंगे तो कोई भी इशू नहीं आएगा। एंड वी हैव 1000+ क्लाइंट्स, एंड बाय गॉड्स ग्रेस किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आती है कभी भी, दे आर ऑल डूइंग फाइन। जो भी नोटिस वगैरह आया, हमने सिंपली उसको, वो इट्स जस्ट अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर, हमने फॉलो किया और हो गया काम, दैट्स इट। अगर आप कोई भी चीज अपने साइड से लैग करोगे तभी आपको दिक्कत होगी, अदरवाइज दिक्कत नहीं होगी। अगर आप अच्छे बिजनेसमैन हो, सीरियस बिजनेसमैन हो, आप ये सारी चीजें करके चलोगे। जैसे पुराने जमाने में लोग अपने बही खाते मेंटेन करके चलते थे, सेम वही चीज है, जस्ट डिजिटल फॉर्म में है, दैट्स इट। सो अब ये
कुछ चैलेंजेस हैं जो लोग फॉलो मतलब जिन लोगों को देखने झेलने पड़ते हैं, मतलब फॉलो करने पड़ते हैं। दिक्कत आती है लोगों को इन सब चीज़ों में कि इतनी सारी एजेंसीज़ हैं ऑनलाइन। आप अभी जाके एलएलसी इन यूएसए सर्च करो गूगल पे, 50 वेबसाइट्स आ जाएँगी। आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो वेबसाइट्स आ रही है ये एक्चुअली सीपीए एजेंसी है या नहीं है? अब क्योंकि वर्ल्ड में इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है लोगों को, इतनी अवेयरनेस नहीं है कि यूएसए का टैक्स प्रोफेशनल होता कौन है। एक सीपीए होता है, जैसे इंडिया में तो सबको पता है सीए होता है। अगर आपको इंडिया में कोई भी टैक्स फाइल करना होगा, कंप्लायंसेस से रिलेटेड कोई भी हेल्प लेनी होगी या फिर कंपनी रजिस्ट्रेशन करनी होगी, आप एक सीएस या फिर सीए के पास जाओगे, ये सबको पता होता है। यूएस में किसके पास जाओगे आपको नहीं पता है। सो इस चीज का फायदा उठाकर बहुत सारी एजेंसीज मार्केट में हैं जिन जो ये सारी सर्विसेज ऑफर करती हैं एंड दे ऑनलाइन खुद को प्रमोट करते हैं वो लोग। सो आपको अगर पता करना है कि कोई एजेंसी जिसको आप हायर कर रहे हो वो एक प्रोफेशनल सीपी एजेंसी है या नहीं है, आईआरएस सर्टिफाइड सीपी एजेंसी है या नहीं है, उसके लिए आपको क्या करना है, यूएस के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाना है जो कि है irs.gov। वहां जाकर सर्च बार में जाइए आप और एजेंसी का नाम सर्च कर लीजिए। जैसे ये मैंने करके स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, ट्रू एनालिस्ट सॉल्यूशंस एलएलपी। आप ऐसे सर्च करोगे, एजेंसीज की लिस्ट आ जाएगी। उस लिस्ट में अगर उस एजेंसी वो एजेंसी प्रेजेंट है जिससे आप काम करवाने वाले हो, दैट मीन्स वो आईआरएस सर्टिफाइड है, जैसे हमारी एजेंसी का नाम आ रहा है। ऐसे अगर अदर एजेंसीज का आता है जिसके आप थ्रू आप काम करवा रहे हो तो आप करवा सकते हो। अदरवाइज आप समझ जाइए कि वो कोई सीपीए एजेंसी नहीं है, और हो सकता है उस एजेंसी में कोई सीपीए हो ही ना। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो खुद को सीपीए एजेंसी बोलती हैं बट दे डू नॉट हैव एनी सीपीए इन देयर एजेंसी। इट्स लाइक कि आप किसी साइबर कैफे गाय को हायर कर रहे हो टू रजिस्टर योर कंपनी। सो इट्स क्वाइट रिस्की, आई डोंट रिकमेंड दैट। बाकी आप इस तरीके से उसको वेरीफाई कर सकते हो एंड यू आर पेइंग द सेम अमाउंट ना। तो फिर आप किसी साइबर कैफे वाले को क्यों पे करोगे, आप जब सेम चीज में सेम सेम एफर्ट्स में किसी सीपे को हायर कर सकते हो। सो आई बिलीव आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए टू फाइंड आउट इफ द एजेंसी इज आईआरएस सर्टिफाइड सीपी एजेंसी और नॉट। So that's all. Thank you for today, and we can move ahead with the question answer round. Sonia, up to you. Thank you, Ankit. I think the presentation was really very engaging and very insightful. So thank you so much. Uh, so I think I request all my participants, you can now please ask your queries, questions, doubts, anything regarding the topic, of course. So we have both of them, Ankit and Utsav, both are available. So if it is regarding little financial things, Utsav is there to answer you. And I see one hand raised. Okay. Manas ji, would you like to ask the question now? Please unmute Manas. Okay. Okay. Uh, Samir ji, very good evening. Would you like to ask your question now? Well, Samir ji, can you be a little louder? hello, am I audible now? Yes, you are. Hi. So, thank you for this webinar and session. So, my question was with respect to the audit parts. On one of the slides, it said that we should keep on doing the compliances monthly. So, are the tax audit requirements and statutory audit requirements similar to that in India? Is it something like we have to get it done by a CPA only, or can we the CPA requirement is not there and I can simply follow it myself? एक्चुअली वो जो मंथली वाला था, इन दैट इट वाज लाइक कीपिंग द रिकॉर्ड्स मंथली। सो अगर आप बुक कीपिंग खुद कर सकते हैं सो आप मंथली बुक कीपिंग कर सकते हैं। इट्स नॉट फॉलोइंग द कंप्लायंसेस मंथली। कंप्लायंसेस तो ईयरली क्वार्टरली जो भी होते हैं वो अलग होते हैं, बट वहां उस स्लाइड में जो पर्टिकुलरली था इट वाज अबाउट द
it was about keeping the records. तो जो भी आपके transactions हो रहे हैं monthly basis पे, उसका आप रिकॉर्ड रखिए बस कि ये ट्रांजेक्शन्स किसके अगेंस्ट हो रहे हैं। अगर आप वो खुद रख सकते हैं, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आप खुद कर सकते हैं तो आप खुद कर सकते हैं। अगर आप किसी प्रोफेशनल को हायर करना चाहते हैं तो आप किसी सीपीए एजेंसी से भी करवा सकते हैं, आप किसी अकाउंटेंट से भी करवा सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। Okay, so the record keeping I can do in that manner. And what about the audits part? There was also audits mentioned. So can you expand on that a ऑडिट्स, little? हाँ हाँ, वो ऑडिट्स मेंशन था फॉर इन केस ऑफ एनी ऑडिट्स, दैट इज कि अगर गवर्नमेंट का फ्यूचर में कोई ऑडिट नोटिस आता है, ऑडिट नोटिस जो मैंने एग्जांपल भी दिया था हमारे क्लाइंट के पास आता है रेगुलर ऑडिट ऑडिट नोटिस, उसमें क्या होता है कि वो आपसे सिंपली बस डिटेल्स मांग लेते हैं। सो उस केस में जब नोटिस आता है तब आप उसी मोमेंट पे भी किसी को हायर कर सकते हैं कि ये नोटिस आया है एंड व्हाट डू आई डू नाउ। सो दे विल हेल्प यू गैदर ऑल द इन्फॉर्मेशन। अदरवाइज अगर आप किसी भी सीपी एजेंसी के टच में रहोगे, स्टार्टिंग ही आपने किसी सीपी एजेंसी के थ्रू की होगी, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू हैंडल ऑल दीज थिंग्स। बट ये कोई मैंडेटरी चीज नहीं है कि आपको ईयरली या मंथली कुछ ऑडिट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। Okay, okay. This seems a lot easier than the Indian environment, honestly. Thank you, Ankit. Yes, it is. It is. In USA, the compliances and all are very easy as compared to India. Thank you, Ankit. So we have next Abhinav ji. Would you like to ask your question now? Very good evening. Please ask your question. Yeah, hi. Am I audible? Yes, sir, you are. Yeah. So actually, one of my client company, right, they got incorporated in Delaware in 2019, right? And that was basically Y Combinator funded. But during COVID, this business in India got totally collapsed. So since 2019 onwards, they have not done any compliance in that company, and neither a business has been churned up there. And now they want to close that company. So what is the way out? As somebody told me that if the compliances are not done there in the USA and Delaware for continuously of 5 years, 6 years, then government automatically close this company. Is this statement is true, or there is some other procedure for that? Please guide. Sir, can you please answer that? Yeah, so whenever if you are not filing the annual reports with the Delaware or any state secretary of state, then government automatically make it an inactive. It is just like the striking of the company from the registrar. So if you are not filing, then it will be automatically dissolved. So will it have any impact on the directors, like any penalty, something like that? As like in India, if we don't file it, then Indian directors get disqualified. Yeah, so it depends on the type of structure what you have selected. If it is just a LLC, then there won't be any kind of penalty or nothing will come. But if it's a corporation and it is registered as a C corporation, then we need to check whether, I mean, they have filed any annual returns or not. It's an LLC. It's an LLC, and they have not done any filing till date. Yeah, then it's okay. We don't Okay, so without filing, it will automatically get dissolved, right? Yes, exactly. Okay. Okay. Thank you for the answer. Thank you, Abhinav. So who do we have next? Manasya, are you ready to ask your question now? Manisha, can you unmute Manisha Srivastava ji? There. Am I audible? Yes, ma'am. Good evening. Please ask your question. Good evening. Yeah, I have two questions. One is around how much expenditure is involved in opening an LLC. And the second one is, if I'm manufacturing something here and I just want to market it there, then is that possible? Yeah, first of all, the costing depends on the state कि आप कौन से state में register करते हैं. So as I told in the between as well, like every state has a different fees and costs involved in incorporation. So first of all, we have to choose the state. I can give you a brief idea. It will cost you somewhere around $300 to $500 at least. Okay. And
Regarding the manufacturing part, if you are manufacturing something in India and wants to market and sell in USA, yes, that is possible. You can do that either through your own website or through Amazon or any marketplace. Okay. Yes. If they are plant-based materials, I think then we have to go through quarantine measures also. I'm not sure about that. Okay. Sorry. Yeah, it won't be quarantine measures, but you will need to get the approval from the Department of Agriculture in the US and get the import permit first before you importing any plant-based product in the US. Okay. Thank you. Thank you. So who do we have next? Nitikesh ji, would you like to ask your question? Hi, good evening. Please ask your question. I'm sorry. There's some issue. We can't hear you. Nitikesh ji, could you try again? Hello. Sir, good evening. Hello. Yes, good evening. Please ask your question. Yes, my name is Prakash Maladkar. Okay. Welcome, sir. Okay. I would like to ask you if I would like to start a manufacturing facility in USA. Who will guide us to select the suitable location for the future business, which we have to start in manufacturing in USA? Okay, so do you have someone in the US to be your partner, or no one is there in the US for you? Not yet decided any partner, but is it possible to find out suitable partner and start manufacturing activity? Yeah, you can do it. But the main thing is that to start the manufacturing activity, you will need to hire a space in the US. You will need to get the warehouse or kind of a commercial space to start the manufacturing facility. And to do that, you will need a residential partner in the US who can sign the lease agreement and who can give his or her credentials like SSN number and the residential status, whether it's a green card holder or a US citizen. So all those documents will be required to sign the lease agreement, and then after only you can start the activity there. See, we have already running a private limited company here in India, and we would like to start there as well. And what I heard that in government, in some certain cases in USA, they first take a deposit for the land and they will return when the plant goes start manufacturing. Is it right? No, I haven't heard anything like that. Okay. Bharat Forge had purchased land of 70 acres by paying money, and they have after starting manufacturing they had returned back money from the government, US government. Okay. Yeah, so I mean, we can discuss more on this if you can give some brief about it after this session. We can discuss and plan something. Who will guide us to select the proper location? That we can help you. You are helping us. Yes. When should you can contact? You can contact us today after this call. Okay. Okay. You kindly leave your phone number or contact details, Yeah, sure. so that we can contact. Maladkar ji, Prakash Maladkar ji, you can also leave interested in the chat session and somebody from our team will get you connected. I have already written in my chat this thing. Wonderful. No issue at all. We'll get you connected as per the availability after the session or probably in a day or so. We'll get you connected through them. So you can have your discussion completely. Okay, I'm waiting for. Thank you so much. Thank you. Thank you. Okay.
Okay, so we have Saroja ji. Please ask your question. हाँ जी, नमस्ते सर। मैं तेलंगाना स्टेट से बिलोंग करता हूँ। जी सर, पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। हाँ सर, अभी जो 3 स्टेट में बिजनेस करने के लिए अपॉर्चुनिटीज है बोल रहे थे ना सर, उस तो वो स्टेट में कौन सा प्रोडक्ट इंडिया प्रोडक्ट को ज्यादा डिमांड है सर? एक्चुअली स्टेट, वो पर्टिकुलर स्टेट में ही आप सेल नहीं करते हो, जस्ट रजिस्टर तो आप वहां पर करते हो, लेकिन सेल आप पूरे यूएस में कर सकते हो। तो अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट ऐसा है जो आपको लगता है कि यूएस में उसकी डिमांड होगी, वो आप प्रोडक्ट कोई भी सेल कर सकते हो, और किसी भी स्टेट में रजिस्टर करके कर सकते हो, जो भी आपके लिए मोस्ट सूटेबल रहेगा। तो खर्चा वो कितना आता है सर, अगर वो स्टेट में करना है बोल तो? एक खर्चा आपका $300 से $500 के अप्रोक्स आता है। ठीक है, तो वो ईयरली भरना पड़ता है सर, रिन्यूएबल है सर वो? ये सिर्फ आपका कंपनी इनकॉर्पोरेशन का खर्चा है, बाकी रिन्यूअल का भी स्टेट पे ही डिपेंड करता है। तो रिन्यूअल आप समवेयर अराउंड $200 से $300 का मान सकते हो। तो इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका कुछ कांटेक्ट नंबर ड्रॉप कर दीजिए सर, हम कांटेक्ट करेंगे। दूसरी बात ये रही, तो वो कंट्री में ज्यादा अपना देश का प्रोडक्ट कौन सा जाता है उसका लिस्ट फाइंड आउट करिए। हम लोग वो प्रोडक्ट भी हम रेडी कर लेंगे, उसके लिए हम उधर एक्सपोर्ट करने के लिए भी ऑनलाइन ई कॉमर्स मार्केट भी थोड़ा ज्यादा बिल्ड करने की कोशिश करेंगे सर। ठीक है, हम करते हैं आपको कांटेक्ट, एंड फिर आपसे डिस्कस करते हैं इस चीज के रिगार्डिंग। जरूर सर, आपका नंबर ड्रॉप कर सकते हैं सर? आप चैट में प्लीज इंटरेस्टेड ड्रॉप कर दीजिए, एंड उद्यमिता टीम विल हेल्प अस टू गेट इन टच। ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू। सरोजा जी, आपकी डिटेल्स हमारे पास हैं, आपका ईमेल आईडी है, अगर आप अपना नंबर छोड़ना चाहते हैं आप छोड़ दीजिए, और जैसे भी अवेलेबिलिटी होगी उत्सव जी की, अंकित जी की, हम आपको उनसे बात करा देंगे। ठीक है, थैंक यू मैडम, धन्यवाद। थैंक यू जी। सो हु वी हैव नेक्स्ट? विनय जी, वुड यू लाइक टू आस्क योर क्वेश्चन? Unmute, Vinay ji. Also, I would request Utsav and Ankit, there are quite a few questions mentioned in the chat. So, meanwhile, if you can just have a look there as well, because Hello, am I audible now? yes, you are. Please, good evening. Ask your question. Yeah, good evening everyone. मेरा क्वेश्चन यही था कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस इन इंडिया, वहाँ पे मुझे कोई लाइसेंस चाहिए तो ऐसा लाइसेंस भी लगता होगा वहाँ पे? RCMC सर्टिफिकेट जैसा इंडिया में लगता है, वैसा कुछ सर्टिफिकेट वहाँ पे भी लगेगा? Yeah, I mean, most of the general products are exempt. So for that, you will not require any kind of a license, but there are specific products which is related to the either a drug related or a chemical related, or it's a plant-based product related. So for those products, there will be a separate license will be required. So depending on your product, we can guide you on that, which license will be required, or if it is not required, then we'll let you know that as well. लाइक सिंगल स्पेसिफिक कोई लाइसेंस है जैसा इंडिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस रहता है, ऐसा एनी स्पेसिफिक लाइसेंस है और प्रोडक्ट बेस्ड है? No, it is a product based. ओके, थैंक यू। थैंक यू। Okay, who do we have next? Vinay ji? Vinay ji or Mr. Yash Natani ji, would you like to ask your question now, please? Hello, am I audible? Sir, Yash ji, good evening. Please ask your question. Hello. Yes, good evening. So my name is Yash Nitani and I'm from Jaipur, and I run a jewelry business, and I'm looking to expand to US. So like I would like to know if like the Indian business also needs a structure like a private limited, like because I am currently in a sole proprietorship business. So do I need a
private limited? And second, my second question was like, if what like the business bank account that will be created in the US, will it require a virtual address, or like it will require a physical address? एक तो आपका जो इंडियन एंटिटी वाला क्वेश्चन है वो रिक्वायर्ड नहीं है, आप ऐसे ही यूएस में रजिस्टर कर सकते हैं। और आप यूएस में B2B सेल करना चाहोगे या फिर ऑनलाइन सेल करना चाहोगे, लाइक डायरेक्ट कस्टमर्स को सेल करना Online and e-commerce, and like later ऑनलाइन on ई we'll कॉमर्स? try to be B2B also. हाँ, तो अगर आपको ऐसे ऑनलाइन ई कॉमर्स में करना है सो बिल्कुल कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इंडिया में रजिस्ट्रेशन की। वो बस Okay. आपका पैसा यूएस से इंडिया मूव करने के लिए या फिर सामान इंडिया से वहां भेजने के लिए रिक्वायर्ड होता है। Like we are manufacturing in India and shipping it from India only. So how will like that work? हाँ, सो आपको इंडिया से एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस लगेगा, वो इंडिया से वो लगेगा। है। यूएस कंपनी, हाँ, यूएस कंपनी का कोई लेना देना नहीं है उससे। यूएस कंपनी तो Okay. सिंपली आपके इंडिया से आपसे प्रोडक्ट परचेज कर रही है, चाहे वो आपसे करे या किसी और से करे, सिंपली आपकी Okay. कंपनी परचेज कर रही है प्रोडक्ट, राइट? सो अब तो इसमें उस मतलब कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड नहीं चाहिए, मतलब सो नेसेसरी नहीं है। हाँ, नेसेसरी नहीं है, आप सिंपली जैसे एक्सपोर्ट करते हो ऐसे एक्सपोर्ट कर दोगे यूएस एलएलसी को अपनी। अब अगर आप जैसे अमेजोन के थ्रू सेल करते हो तो अमेजोन के वेयर हाउस में भेजना होगा आपको प्रोडक्ट, तो Yeah. उस प्रोडक्ट को इंडिया से यूएस शिप करने के लिए रास्ते में इंडिया में ही आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस देना पड़ेगा ना, कि प्रोडक्ट आप शिप क्यों कर रहे हो, राइट? Yes. सो बस वो उस रिक्वायरमेंट के लिए आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज और कोई रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है सच, ठीक है? और सेकंड क्वेश्चन क्या था आपका? बिजनेस बैंक अकाउंट के लिए वर्चुअल बिजनेस एड्रेस वर्क हाँ, करता है या राइट। फिर उसके लिए? हाँ, वर्चुअल बिजनेस एड्रेस वर्क करता है, जो हम एड्रेस आपको प्रोवाइड करेंगे, यू कैन इजीली ओपन अ बैंक अकाउंट। इवन हम आपकी बैंक अकाउंट खोलने में भी हेल्प करेंगे इफ यू प्रोसीड विद अस फॉर रजिस्ट्रेशन एंड ऑल। ओके, ऑल्सो मेरा एक और क्वेश्चन था कि व्योमिंग की फॉर्मेशन कॉस्ट क्या होती है, और अगर हम पार्टनर करना चाहें कोई भी क्लाइंट से, या फिर हम B2B करना चाहें, तो उसकी फिजिबिलिटी कैसे रहती है यूएस में? फिजिबिलिटी तो है, मतलब आप किसी भी बिजनेस के साथ, किसी भी पार्टनर के साथ इजीली पार्टनरशिप कर सकते हो ये अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए। बट उस केस में आई डोंट थिंक वायोमिंग वुड बी अ ग्रेट स्टेट फॉर यू, क्योंकि यूएस में वायोमिंग की इमेज थोड़ी सी खराब है। सो अगर आप ओके। B2B डील्स करने जाते हो एंड आपका क्लाइंट आपसे पूछता है आप कहाँ रजिस्टर्ड हो, तो वो Yes. मैटर करता है। सो अगर आपने वो बोला वायोमिंग, देन दे विल कंसिडर यू काइंड ऑफ, मतलब कंसिडर ही नहीं कर लेंगे, बट उनको रिस्की लगेगा, उनको लगेगा फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि वायोमिंग से काफी फ्रॉड हुए हैं लास्ट फ्यू इयर्स में। सो आई डोंट थिंक वायोमिंग में करना चाहिए उस केस में। अगर आपका प्लान है B2B के लिए, देन हम किसी बेटर स्टेट में जा सकते हैं, फ्लोरिडा, टेक्सास या और भी स्टेट्स हैं, मोंटाना एंड ऑल में भी जा सकते हैं। सो वो हम आपसे डिस्कस करेंगे, तो आपको बताएंगे, तो आप चूज कर पाओगे इजीली कि कौन सा स्टेट आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब रही बात कॉस्टिंग की, वो कॉस्टिंग फिर अगेन स्टेट पे डिपेंड करेगी। $300 to $500 के समवेयर बिटवीन आ जाएगी कॉस्टिंग आपकी। Okay. Also, we will like to connect with you, so we'll like connect later श्योर on. श्योर, उद्यमिता टीम विल हेल्प यू इन दैट। आप बस ड्रॉप कर दीजिए आई एम इंटरेस्टेड एंड दे विल हेल्प अस गेट कनेक्टेड। ओके Okay. Thank you. ओके। Okay, who do we have next? Good evening, Mr. Prajapati. Please ask your question. This Yashji, you were waiting. You wanted to ask question. So Vinay. Ma'am, I have one more question, if I may. Yeah, please. We are basically a software providing entity. So we were looking into providing this service to US based clients, but as a subscription model, right? There would be no physical delivery or anything. It would just be a online subscription based thing. So I would like to know what would be the tax implication of all that, and do I need any sort of compliance in US if I do that? हाँ, अगर आपका यूएस में फिजिकल ऑपरेशन नहीं है, सिंपली आप ऑनलाइन कोई सॉफ्टवेयर बेस्ड सब्सक्रिप्शन सेल कर रहे हो, इन दैट केस यू वोंट हैव टू पे एनी टैक्सेस इन यूएसए। टैक्स आप अपने होम कंट्री में पे कर सकते हो इंडिया में,
यूएस में टैक्स अगर आप रजिस्टर्ड हो तो कंप्लायंसेस फॉलो करने पड़ेंगे आपको। स्टेट वाला कंप्लायंस जो कि स्टेट में आपकी कंपनी रिन्यूअल वगैरह होती है वो सब फॉलो करना पड़ेगा, और फेडरल में अपनी इनकम रिपोर्ट करनी पड़ेगी। दैट्स इट। टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा बट इनकम रिपोर्ट करनी पड़ेगी। But that is only if I get registered there. So do I need to get registered there for an online service? दैट डिपेंड्स ऑन यू एंड योर क्लाइंट्स। इफ आपके क्लाइंट्स इंडिया में आपको पे करने के लिए रेडी हैं, दे डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट, देन यू कैन डू फ्रॉम इंडिया ओनली। पेमेंट आप इंडियन अकाउंट में रिसीव कर रहे हो। अगर आपको लगता है कि आपके क्लाइंट्स आपको इंडिया का देख के, मतलब एक्चुअली क्या होता है ना, बेसिकली ऑन ग्राउंड रियलिटी ये है कि अगर यूएस की कोई लोकल कंपनी रहती है ना तो दे ट्रस्ट मोर, इजीली वो पे कर देते हैं। सो अगर ये इशू अगर आपको आता है कि वो इजीली पे नहीं कर रहे हैं कुछ भी, तो इन दैट केस आपको अपने बिजनेस के प्रॉफिट के लिए वहां रजिस्टर करना पड़ रहा है अगर, तो आप कर सकते हो। इट इज नॉट अ लीगल रिक्वायरमेंट। आप सेल इंडिया से भी कर सकते हो, ऑनलाइन ही तो सेल कर रहे हो आप। Okay, thank you. ओके। Hello. Yes, sir. Hello. Doctor, please. Yeah, I am Dr. Raj. Yes, Dr. Raj, please ask your question. Yeah, ours is pharma manufacturing company, OTC products. So I would like to start OTC manufacturing unit over there. So can you help us, and what is your charges, service charges, and how you will help in this manufacturing setup? What is, can I get any sick units or any other units outright to buy there? Hello. Utsav, can you answer that, please? Yes, we can help you to register the company in the US and set up the whole operations. So there are a couple of things will be involved. First of all, you need to determine the state where you want to set up the manufacturing facility, and will you have wherever it is available. If it is available right to sell, we would like to buy, or otherwise any sick units are there also, we can buy and remodify. And our objective is to manufacture OTC products, OTC drug products, tablets, capsules, and other dosage forms. Okay, all right. So are you already manufacturing this in India? We are manufacturing. We are manufacturing. We are a 10 years old company in Hyderabad. We are already manufacturing. We are into the business. And you have the FDA registration? FDA. Yes. We are not approved US FDA, and our company is right now we are doing non-regulated, semi-regulated market. But dietary nutraceutical supplement and OTC, there is a huge demand in US. I know that. So we are looking for some space. So those who are outright sell the plant, somebody or sick unit they would like to sell, we would like to take over that plant, and we would like to remodify as per the requirement of USA regulations. We will proceed with that. Okay, sure. Yeah, we can help you in that. So better if you can connect with us after this session, we can have a detailed discussion and we can set this. Generally, how you will charge, sir? What is your charges for the registration of the company and bank account opening and taxation and everything? So many numbers are there. Company identification number, everything is there. How much you will charge? So every state has a different fee structure. So as I said, first we need to determine the state where you will get the local space to have that manufacturing facility, and based on that we will register the company. So our first step will be the where you will have that space. So that will be the first step that we need to determine. You have already, some of your clients are US, you already set up this kind of services somebody else? Yeah, we have done that. Can I get the references of those candidates? Yeah, we can have that. So what is your approach generally this kind of business activities? How you will proceed with that? So generally, first of all, you will need someone in the US who can go to the place, who can visit the place and have the lease agreement signed. And once that is done, then based on that, we can register the company at that particular address, and then you can open the bank account, and then you can start the manufacturing facility over there. Okay. Do you have any idea? And some of the companies are outright sell, like India. Some contacts are there. We know that this company is going to sell that. Any kind of consultants are there.
or any website or any that kind of sites are there? So these companies available, ready to sell, these companies. Yeah, it is available in the Google itself, and you can find it by yourself, or also we can help you in finding that out. So that's not a problem. Okay. Yeah. Fine, sir. Fine. Yeah. All right. Thank you, Dr. Raj. Thank you, Dr. Raj. Thank you so much. So Thank who you. do we have next? Sorry. No. Thank you, Dr. Raj. We'll Thank connect you, with madam. you. Yeah. Thank you so much. Okay. Who do we have next? Mr. Kuldeep. Kuldeep ji, would you like to ask your question? Good evening, Rajesh ji. Please ask your question. Me? Yes, Kuldeep ji, please ask your question. Yeah, actually, we are a remote IT service provider, and I have some questions. Can we register with the same name in the US, which we already LLP in India? It depends on the availability. If the name is available, then yes, we can register with the same name. Okay, and is that mandatory to go the US? Suppose we have registered the business, right? And in the year or like something in the further in the future, it's a mandatory to go there. No, it's totally an online process. You can do everything virtually, and you don't have to visit USA for anything. You can register and open a bank account and run your entire business online. Okay, and for New York, so what is the starting the charge for LLC? In New York, it will cost around $400 to $500. Okay, and how many days it will take? 20 to 25 days. Okay. So is there any other paperwork like import-export certificate required or something? No, it's not required for any virtual services. For service-based businesses, paperwork is very less. You just have to register over there, open a bank account, and you are good to go. It's the simplest way to start. Okay. And Thank you. New York would not be a great state for your business because it has high taxation. So I'll recommend you a better state. We will have a discussion if you are interested, and we can proceed. Okay. Got it. So you Thank can you. drop a message interested, and we will reach out to you, and then we can have a discussion regarding this. Sure, we'll do that. Thank you. Thank you so much. Okay, thank you. Yes, Rajesh ji, good evening. You can ask your question now. Good evening, ma'am. Am I audible? Yes, sir, you are. Yeah. So my question is that once we establish a company with your help, and after a period of say 1 year or 2 years, if we want to come over there, is that possible? And if yes, on which visa we can come over there? So can you answer that? Yeah. So to work in the US, there are a couple of visas you will require. Like there is a L1 visa, there is a H1, or you can do the EB5 as well. So first of all, to apply for all this visa, your company should be at least 2 years old, and your company should have a sufficient of revenue and profits, so that the company can sponsor a non-resident employee or a non-resident candidate in the US. So yeah, after 2 years you can do that, but you need to have the good performance in the initial 2 years to apply for the visa. But as a owner of the company, still I require to do all these things? Yes. You can, in the L1 specific option, there are other options are also there. Like if you have the already company registered in the India and you are operating well here, then based on that, you can apply for a new office registration in the US. But for that, your Indian company should be operating very well in India. And then you can show it as you're opening a new branch in the US and you can apply for L1. Good. Thanks. Okay, who do we have now? Prajapati ji, would you like to ask your question?
Shashiji, would you like to ask your question? Can we just answer a few questions in the chats, because if you think those are not being answered, because Yes, they're quite please. a few. One question is there, do we need a physical property over there for registration process? So no, we do not need any physical property over there. It is not necessary. If you have one, then it's great. But if you don't have that, then it's fine. We can do everything online. We will provide a virtual business address on which your company will be registered. So yes, we do not need any physical property here. Shashiji, would you like to ask your question? हेलो Hi, please. Good evening. Ask your question. मेरा ये क्वेश्चन था सोलर को लेके, क्या रजिस्टर का यूएस रजिस्टर में क्या है, मतलब रूल नियम आपके जो भी है. So you would like to export the solar panels from here to US, or what it is? जी हाँ. Okay, all right. Yeah, you can do that. ओके, It is उसके लिए easily doable. रजिस्टर करने के लिए क्या करना होगा वहाँ पे? कौन से स्टेट में रजिस्टर करना है, that first we need to decide, and we can start the process, and within a month the company will be registered and your bank account can be opened, and once the account is open, then you can export your solar panels from India to the US. ओके, ऑनलाइन करना हो तो क्या मतलब प्रोसीजर रहेगा? So procedure is simple. We will require a few of your documents and whatever the company name that you would like to keep, so that you will be able to provide. And once we have all the information, then we will check the availability with the State Department whether the name is available, and if it is available, then we can start the registration process. It will be very simple. ओके ओके, Yeah. ठीक है, थैंक यू. Is there anybody else who would like to ask, please? Ankit, is there anything else? Rajesh ji, would you like to ask? हाँ जी, पूछिए ना. राजेश जी, पूछिए अपना क्वेश्चन प्लीज. नहीं, मैंने पूछा मैडम. अच्छा, हो गया आपका? हो गया. ओके ओके, थैंक यू. Utsav, would you like to say something, or you want to just add up? We have one more question. This, how many compliances do we need to file in a year? So, अगर आपका बिजनेस में मतलब अगर टैक्स रिक्वायरमेंट टैक्स लाइबिलिटी $1,000 से ज्यादा है, इन दैट केस आपको क्वार्टरली एडवांस टैक्स फाइल करना होता है. सो क्वार्टरली कंप्लायंस ऐड हो जाते हैं. अदरवाइज ईयरली कंप्लायंसेस मेनली होते हैं, जो कि स्टेट के भी होते हैं और फेडरल के भी. सो स्टेट में कंपनी रिन्यू करने के लिए आपको हर साल एक रिपोर्ट फाइल करनी पड़ती है. हर स्टेट की थोड़ी डेट अलग है. जैसे कुछ स्टेट्स में जिस मंथ में आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है उसी मंथ में नेक्स्ट ईयर रिन्यू करना होता है. कुछ स्टेट्स की फिक्स्ड है, जैसे टेक्सास की 15 अप्रैल फिक्स्ड है, तो आपकी कंपनी कभी भी रजिस्टर्ड हो 15 अप्रैल को आपको रिन्यू करना होता है. सो और फेडरल का 15 अप्रैल से पहले आपको टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है एवरी ईयर. वहाँ पे फाइनेंशियल ईयर होता है जनवरी टू दिसंबर. सो इफ यू हैव रजिस्टर्ड लेट्स से इन अगस्त, स्टिल आपको 15 अप्रैल से पहले अपना टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा फ्रॉम अगस्त टू दिसंबर. फिर नेक्स्ट ईयर से जनवरी टू दिसंबर तक का जो भी टैक्स रिटर्न बनेगा आपका, वो आपको उसके नेक्स्ट ईयर 15 अप्रैल से पहले फाइल करना होगा. सो दैट इज हाउ इट गोज. तो ईयर के बीच में कुछ ऐसे कंप्लायंसेस आते नहीं है, जस्ट वो एडवांस टैक्स फाइलिंग वाला आता है अगर आपकी $1,000 से ज्यादा की टैक्स लाइबिलिटी बनती है तो. And some of the compliance are depending on your operations. If you are hiring any employee in the US, then the payroll compliance will come into picture. Every bi-weekly they generally run the payroll,
So bi-weekly or a monthly, you need to run the payroll, you need to give the payments to the employees, we need to file the quarterly returns, and at the end of the year, we need to issue the W-2s. May give the frequency of either monthly or quarterly, depending on your volume. And we will need to file the sales tax return in the US. It will be similar to the GST in India. We see a few more hand raised. Mr. Chandan, would you like to ask your question? Yes. Hi, good evening, everybody. Am I audible? Yes, sir, you are. Okay. I needed to check quickly. I had floated a company LLC in 2019 before COVID, but unfortunately, the company couldn't do much business, very little business. And then COVID happened. And ever since that, nothing really took off there. So the company is now inactive, and probably I checked with the agent. It has been terminated, as you previously mentioned, that if it is not active for 5 years, it is automatically terminated or whatever. Now I want to start another company with a different name. Though this company, the bank account is still active with Bank of America, which I had physically opened. Now I want to open another company with another name, probably in the same state of Maryland or Florida, right? So is that possible? Yes, you can open the another company in another state. Okay. Okay. So why I'm saying Florida, because I travel to Florida very often because my sister lives there. So probably it becomes easy to get. Is it easy to get a virtual address in Tampa or Miami? And how expensive it is to get a virtual address? आपकी सिस्टर का एड्रेस भी आप यूज कर सकते हैं, राइट? इफ Okay. यू वांट. Yeah, she would want that, no problem. Or we could have a commercial address because she's a doctor. So I don't want to use a residential address. Probably I would want to have a commercial address because it gives more authenticity, so as to say, right? And how expensive it is to open a company, because obviously you mentioned about Delaware. We all know Delaware is the best option, but for all bigger corporations, Maryland again. Is it very expensive now to open a company and to maintain it year after year? No, it is not expensive to open, but yeah, it is expensive to maintain because there will be the Maryland income tax that you will need to pay, which is not there in the Florida or in the Delaware. Okay. So let's say, for example, we can do Florida. So where could I get contact details, like your email ID? I will get it after after this webinar. Will that be an email, or I can take it down, or what is it? Yes, you can drop your number in the chat, and Udyamita team will help us get connected with you, and we can then have a discussion. Okay, awesome. All right, thank you very much. Okay, thank you. Thank you. So who do we have next? I see Vishriti Sabuji. Would you like to ask your question? Shruti, would you like to ask your question? Hi, good evening. Hi, sorry, I wasn't able to unmute it. Yeah. Yeah. So I just wanted to know that if I only want to sell on Amazon in the US, do I still need to go ahead and make a company? It I will depends. opt for Amazon FBA in the US. Yeah, okay. So there are two options in case of Amazon. One, you can start from India as well and opt for the Amazon Global Selling Program. And other one is you sell as a US brand and US company in the USA. So to gain more trust of your customers, you can choose that option, because of course they always trust more to their local company. So if you register over there and start selling as a US business, and you will be able to build a US based brand. So
it totally depends on your goal, what kind of business you are trying to build. So you have both options from India and USA. Okay. 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 Maybe we can also connect, after the call so that I can discuss more in detail. Sure, Depending on definitely, that, maybe you can tell me, how to go ahead with it. definitely. Okay. So Okay. you can drop your But contact but or FBA is possible without making a company. yes, it's possible, but Okay. It is it's possible. possible only from India. You have to first Yeah, register yeah. as a seller from India, from GST and all. After that, Yeah. you have to join the global selling program in Amazon. Then you can sell. Yeah. Okay. Okay. Mm. Perfect. Thank you. Yeah, Thank you so much. you're welcome. Thank you. We'll get you connected. Who do we have next? Is there anybody else who'd like to ask? Hemant Kumarji, would you like to ask your question? Yes, please. Good evening. You can unmute and ask your question. Hemanta Kumarji. Can anybody help him unmute, please? Yeah. Good evening. Please Good evening, ask ma'am. your Can you hear question. me? Yeah, can you hear me, please, ma'am? Yes, sir. You are audible. Hanji. Yeah, thank you. Thank you, Ankit ji. Good session. I just want to ask you that if I start a company, already I have a company in India, it's a private limited company. If I start over the US, do I need to comply for any taxation in India also as well? So may I know about that, please? So can you please answer that? Yeah, so it depends on the type of structure that you are selecting. So if it's a C corporation, then the C corporation will be a separate entity and the company will pay tax based on the net profit. So unless you are taking the distribution from the company, you don't need to report anything in India. It's a one-person company. It's a private Yeah. limited. No, I'm talking about the US company. For the Indian private limited, you don't need to do anything in the US. That's a separate entity and you are following the compliances in India. So that part is done. And if it's a single member LLC in the US and you are filing as a sole proprietorship, then whatever the profit that you are earning in the US, that you need to report in your Indian ITR. And whatever the tax you pay in the US, that you can claim it as a credit in India. So there will not be a double taxation, but yeah, if you are paying tax in the US, you can claim the credit in India. Okay. For this, do we need any clearance from our Indian state for that? Or? I'm sorry? No, do we need any, approval or clearance from our No, Indian? not required. Oh. But yeah, if you are holding the Actually, shares in the US, then you need to show it that you are holding the foreign assets in Indian ITR. Okay. and yeah, if you are doing all this in your name, if you form a company um, as a subsidiary of your existing company, then in that case you will have to show. Okay. Okay. But if you are going in your own name, so private limited is a separate entity in India, and in USA there will be a separate entity. Both will not be linked together. So Indian taxation you will handle in India, US taxation you will handle in USA only. Both are not linked. Got it. Okay. Got it. Yeah. Right. Thank you, both of you. Thank you, ma'am. Thank you. You're welcome. Thank you, sir. Thank you so much. So we have Pankaj Kumar. Pankaj Kumarji, please ask your question. Help him unmute, please. Can you unmute him, please? Can he ask the question? Ankit, would you like to add up anything? Would you like to say something, Utsav? We have one more question. Is Yeah. GST there in US just like in India?
So GST is the sales tax, goods and service tax. So in USA, we also have a sales tax on your physical goods. So there is a requirement for that, minimum requirement. If you are selling some physical goods in USA, so if you get orders more than worth more than $1 lakh or 200 number of orders, whatever comes first in one financial year. In that case, you will have to register in that particular state for the sales tax, and you have to file the sales tax in that particular state. But you do not initially have to file any sales tax in any states. And in services also, there are very few services on which you have to pay any sales tax. Otherwise, most of the services are sales tax exempt. So in GST is sorry, US sales tax is not similar to GST like in India. It is very easier over there. In India, we have to pay GST on everything, but there it is not like that. It is much simpler over there. Ankit, would you be answering few more questions which are also mentioned in the chat? Yeah, I'm checking them only. Okay, okay. We also okay. There is a question here. Please explain the regular ODI compliances. ODI means overseas direct investment. Whenever you set up the company in the US and you would like to invest the funds from India to the US company as a capital or as a loan, then you have to route the money through RBI approvals. You need to reach out to the bank and get the RBI approval first to transfer the money. And once that process is done and your money has been transferred, then every year you need to file the annual report, performance report. That's called APR report with the RBI. So in that APR report, you need to show that how the US company is performing. You need to show the income, expenses, and you also need to attach the audited financial statement of the US company. So that thing needs to be done on a year-to-year basis. So there is a deadline for that. So bank manager generally asks you to submit the APR reports if you have done the transaction through ODI. So every year you need to file the APR report and attach the audited financial statements. So, and you need to get the audit done for the US company. And we can help you as a TruAnalyst to transfer the money from India to US using the RBI route. And we can also get your audit done for the US company. And we can also prepare and file the APR reports on your behalf. One more question is there. I have Section 8 company in India and now would like to open its outlet in USA. So can you please answer that? What is Section 8 company in India? Section 8 company. Can you repeat the question? I have Section 8 company in India and now would like to open its outlet in USA. Okay, all right. So that's possible, but it will be kind of a separate entity in the US. You can make it a subsidiary, and yeah, you can open it as a branch in the US and you can run the business. So in the US, we will need to register as a C corporation only. A single member LLC won't be allowed in that case. Pankaj, would you like to speak or? Pankaj, Sonia, can we unmute Pankaj? He just asked a question. I don't think so. He would. This is Mr. Arif Loni ji wants to ask a question. If somebody can unmute him, because his hand appear and then disappears. So Mr. Arif Loni, if he wants to ask a question, please unmute him. And is it Pankaj ji? Would you like to ask another question? Can anybody help Arif Loni ji unmute, and if he would like to ask a question, please.
Because I see him raising hand and then it disappears. Good evening, Utsav. Yeah. Audible? Yes, you are audible. Mega, I'm just the director of RA Paradise OPC Private Limited. So it's basically a manufacturing unit, and I've been running this unit for the last 2 years. I started in April 2023. I was just listening to this session, for last almost 15 minutes, and there were different questions, which are the basic like GST questions, our outlet, and the US norms and conditions. We already know that there are compliance when it comes to private limited company. But I have a question for Utsav, that what will motivate me to set up a unit in the US rather than to choose any country in the Middle East? Like, is there any extra benefit that we will get? And why are we promoting, to set up a business in US? If he can explain that, please. Yeah, so mainly the US entity has a higher weightage compared to the other countries' companies. That's what the people are feel, that the US entity is more secure, more reliable, and if you are dealing with them, then you will get the best services in the US all over the world. So if you are, what about like, go ahead. Yeah, you can go ahead. Okay, thank you. So basically, is there any relaxation when it comes to the compliance, when it comes to the GST, when it comes to the basic taxes that we pay to the state and central government every year? Is there any relaxation as compared to other countries? Like, do we save the money in the US if we set up or operate a unit in US? No, I mean it or is it expensive than India? In terms of compliances, the compliances are smoother and lesser compared to India. The cost will be there, obviously, to fulfill that compliances, but it will be easier to manage and handle the operations in the US compared to India. There will be less paperwork, less compliances, and less headache to manage on deadlines and all the month-to-month compliances. Okay. And is there any minimum investment criteria that we need to show as in bank balance? As in India we have like 10 lakh, I do believe so. But is there any startup amount that we need to show that we have a backup if we start or maybe apply for this US business startup? No, there is no such limit. With respect to bank account, you can open the virtual account with zero balance. If you go with any local bank like Bank of America or Chase, then they will require some minimum deposit like $2,000 to $3,000. So that will be on the bank side, but on the government side, there is no any minimum threshold or any minimum funds that you need to first put to start the business. There is no such criteria. And who will help us, to accommodate, like, the rent accommodation? For example, if I want to be a part of this setup, I'm thinking, like, let's say, for example, if I move to Texas, like a state in US, who will arrange accommodation for me? Who will check, where I can set up, like where is the industrial area that I can be allowed to set up? Is there any entity or is there any team that you have set up who's helping people, to migrate from India to US to set up their business? Yeah. So generally, most of the regular businesses you can set up anywhere in the commercial places in the US. If there is a particular industry you would like to take, then yeah, for example, if it's a manufacturing related, then there are certain areas where most of these type of manufacturing industries are present. So we can give you the idea where these companies are located and give you the area that if you find a place in this area, then there will not be any restrictions on doing the business in that city or the state. So yeah, that give you the overview. But yeah, basically in that area, you will need to find out there are a couple of options available in the Google. There are so many websites available who can give you the idea whether this particular commercial space is available on rent or on the if you want to buy. Those are available on the website itself. So we can give you the area that you can go for this area, and then you can find it out further. If I want to hire an agent who can take care of this, like, until and help me and be beside me until I set up a unit in the US, will there be any agent from your entity or from your company who will be helping me? Although there will be a charges, I know that,
because that will be more helpful and I will feel more confident, to move on, right? If I have somebody beside me who can walk me through and help me to set up a unit at any location. So that would be better rather than I will start Googling, checking the industrial areas, where the industrial areas in US are. Because sometimes you may find an industrial area on Google, which was, maybe updated in the past and which is no more there. So instead of searching on Google, is there any particular agents that you have in US who are helping people from Yes, here we can to help you migrate? on that. Yeah, we also have Okay. the partners in the US who can connect you with the real estate agent as well as can give you guidance Yes. on particular area where you can set up the Yes. Yes. yeah. So that can be possible. Okay. I think so. That is all. And if I want to personally, maybe connect with you or any of your team members regarding this procedure, like about the agent connection in the US. So, do I need to shoot you an email or do I need to send you any details? If yes, so please. Yeah, you can put your interest in the chat section, and then we can reach out to you, Okay. and then we can connect further. Certainly. Thank you, Utsav, and thank you, Megha. Thank you, Arifji. Thank you so much. So, Pankaj, do you like to ask your question now? Mr. Patel, are you still there with us? And would you like to ask your question? I don't think so. Is there? So we can continue, Ankit, if you are answering a few more questions, or probably Utsav have something to add. So we can just continue with that. Meanwhile, I think we have answered all the questions from the chat. I would request my participants if there's anybody else who would like to ask anything, because then we would like to conclude our sessions. And I can request Utsav and Ankit again, if there's anything you would like to just add on before concluding the session. There's anything you want to, talk to people about, something more information you like to give. So you can just take your time now. Utsav, would you like to say something? Yeah, so first of all, before you register the business, you determine whether your products are actually demanding in the US and how much time you can give to run the business. Because I have seen many people are just started and signed up, and then they start doing their existing job or any other business where they are actually doing, and they do not give proper time in the business, and they ultimately incurring the losses, and then they come up with that I would like to close the business and so on. So you spend some time on the researching and analyzing your business area, and then you jump into the market. So then you will become more successful. राइट लाइक इवन हमें अच्छा ही नहीं लगता है ये चीज कि एक बार कोई बिजनेस स्टार्ट करता है फिर उसके बाद पूरा साल रन करके लॉस करके फिर क्लोजिंग के लिए भी इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है. सो स्टार्टिंग में ही अगर आप थोड़ी ज्यादा मेहनत कर लोगे तो इट विल बी बेटर बिफोर टेकिंग एनी रिस्क. सो या मार्केट रिसर्च इज रियली इंपॉर्टेंट. आफ्टर दैट इवन सारे स्टेप्स को आपको अच्छे से ही फॉलो करने चाहिए विद सीरियसनेस. किसी भी स्टेप को आपको लाइटली नहीं लेना चाहिए कि जस्ट रजिस्ट्रेशन ही तो है या फिर बिजनेस लॉन्च ही तो करना है. बस ये सब सारे स्टेप्स को सीरियसली लेना चाहिए एंड देन ओनली यू शुड स्टार्ट एंड देन कीप रनिंग विद द सेम enthusiasm. Yeah, thank you so much, Utsav and Ankit. I think Utsav really mentioned it very clearly now also, so that it's not a rush to, go where everybody is going. You need to do your homework on your own. It's not about just, running through whatever is happening so we can also go. Because if we are spending some money, actually, we need to see we are getting the returns back or not. So I think he made it very clear and easy that it's not about that if they are here today, they are just compelling everybody to join in and then go. It is just that people who are already made up their mind, they have their goals,
They know their the products which can do really well there also, and they can achieve. So this is the platform, you know, because if we keep on just running here and there, we won't be able to get what we want. That is the only reason we have this platform, Udmita Helpline, wherein we get you the best of the experts, you know, and they really guide you. They are like your mentors only. They are not here to cheat or, you know, talk anything which is not even relevant. So I think I would like to really thank both of them for their insight they shared with us, the experience, and made this presentation not only very simple to understand, to go through basic things, but also that how it takes the entire procedure, you know, even a layman was able to understand what it is. So I request once again to the participants here, thank you for being here and hearing it out. We just want that whatever your queries, questions, or the way you are leading towards USA is easy and you are in the safe hands. So whosoever wants to get connected, definitely one of my teammates will get you connected to both of them according to their availability of time. If not today, we can get connected to all of you, maybe tomorrow, day after. So we'll get you connected, that's for sure. So still, if you want to drop in something who still needs to have one-on-one conversation, please let us know and you can get in touch with Udmita even after the webinar also, and we will get you connected. If there's any query, questions, or doubts regarding the session, of course, and they are the experts and they will take you through very safely. So I think the presentation was so engaging that we all had good questions, and we've taken a lot of time of the Utsav and Ankit for spending with us, each one of them. So thank you so much. And please also mention in the comment section how was the session today, or if there is any other topic which we are leaving and you want that to be covered too. So we will really keep it for our reference further, and we'll get you advice experts again on that topic. Thank you so much for connecting. Thank you once again, Utsav and Ankit. We're really grateful, and we'll hope to have you soon again. So thank you so much. Thank you. Thank you. Sonia. Thank you. Thank you, each of the participants. Thank you for joining in for Udmita Helpline. Thank you. Thank you. Okay, guys. Bye-bye. All of you have a great day. Thank you so much. Bye-bye.